Hello students, so in this video we will learn about HTML5. We will see overview of HTML5 and some new features of HTML5 also. So HTML5 is the next major revision of the HTML standard जिसने HTML 4.01, XHTML 1.0 and XHTML 1.1 को भी पीछे छोड़ दिया है. So nowadays we use HTML5. HTML5, it is a standard for structuring and presenting content on the World Wide Web. So now it is a standard. We use HTML5 for creating our web pages. So it is a cooperation between the W3C. W3C is what? World Wide Web Consortium. And the what WG group. What WG means? Web Hypertext Application Technology Working Group. So it is a cooperation between both of them. The new standard incorporates new features like video playback and drag and drop facility. So ये पहले ऐसा नहीं था. वीडियो प्लेबैक के लिए हम वेब डेवलपर वॉज डिपेंडेंट ऑन थर्ड पार्टी ब्राउजर प्लगइन्स, जैसे कि एडोब फ्लैश चलाना पड़ता था अगर आपको कोई वीडियो प्लेबैक करना है, या माइक्रोसॉफ्ट का सिल्वर लाइट था, या गूगल गियर्स. दे वर द एक्सटेंशन जो हमें प्लगइन जैसे यूज करने पड़ते थे फॉर वीडियो प्लेबैक. सो नाउ in HTML5 these facilities are incorporated.